हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 5 के वाटर के। ओके, चैप्टर 5 वाटर एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी के। सो हम उसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हम 3 सेट्स ऑफ एमसीक्यूज करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस फॉर्म? So let's say it's water cycle. Water. Which water is salty? Sea water is salty. Which one of the following is an artificial enclosure for keeping small house plants? So that is terrarium. Which day of the year is celebrated as Water Day? So 22 March is celebrated as the Water Day. The movement that occur in ocean can be broadly called the waves. The Japanese word which means heavy waves is called tsunami. Tsunami struck the Indian Ocean in the 26th December 2004. The largest tsunami wave travels at the speed of 700 km per hour. मैं थोड़ा सा तेज बोलूँ तो आप वीडियो को स्टॉप करके बीच में भी अपना आंसर दे सकते हैं, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज नोन एज टाइड। डेड सी कहाँ पर लोकेटेड है? इजराइल। सो हमारा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट सेट and you can now check the answers. These are the answers of the following question. Then we will move to the another MCQs. Okay, let's move to the another MCQ. Okay friends, this is the second set of the MCQs. Let's start it. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand. What is water cycle? Process by which water continually changes its form is called water cycle. Following are the movements that occur in oceans except wind. The Labrador Ocean current is dash current while the Gulf Stream is a dash current, so it's cold and warm. What is the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day? So it's called the tides. Tsunami is the Japanese word. Where is the cold current originate? So the cold currents originate from the poles. Okay. Sea water contains 97.3 of salts. Which water is salty in taste? So the sea water is salty in taste. इंदिरा पॉइंट वॉज इन, सो यहाँ पे वॉज इसलिए लगा रखा है क्योंकि जब सुनामी आई थी तो वो डूब गया था ना, इसलिए। सो इंदिरा पॉइंट इज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. व्हाट डू यू मीन बाय टाइड्स? सो द राइथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड टाइड्स. द मेजर रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर एज फॉलोज एक्सेप्ट ओशन. Every drop count is a slogan related to importance of water. Water bodies contain salty water are ocean and sea. The movement that occurred in ocean can be broadly called circulation. So let's check क्या हमारे सारे आंसर सही हैं. सो यस, हमारे सारे आंसर सही हैं. एक बार आप दोबारा से रीचेक कर सकते हैं. ओके, सो चलते हैं हमारे थर्ड सेट ऑफ MCQs की तरफ.
So this is the last set but not the least. So let's start it and complete it fast. Okay. Water cycle does not involve which of the following? Rainwater harvesting, condensation, formation of clouds. So rainwater harvesting. The rhythmic rise and fall of ocean. Okay, it's called the tide. What do you mean by terrarium? Artificial enclosure. Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. How much percentage of saline water is available on Earth's surface? So 97.5. On which of the following day is World Water Day observed? So ये कुछ उसी की तरह का है जो हमने सबसे पहले वाले सेट में देखा था क्वेश्चन. The dash originate near the equator and move towards the pole, so that's our warm ocean currents. The water below the ground is known as groundwater. The rhythmic rise and fall of ocean twice in a day is known as the tide. The Labrador and Gulf Stream are the examples of ocean currents because ये cold and warm ocean currents के example हैं. Which of the following does not show water storage? A family gets 3 buckets of water per person per day. Long quick for getting water. Ocean does not show water storage. Taps running dry. Marquees and protest for demand of water. सो इसमें से कौन सा वाटर स्टोरेज को शो नहीं कर रहा है? सो आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज. सो आई थिंक फर्स्ट can be may be correct. When the moon is in its first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and earth, resulting in low tides. These tides are called spring tides. Ponds are sources of fresh water. What percentage of the Earth's surface is covered with water? So about 71. पहले तो 71 था, हो सकता है 81 हो गया. The tsunami of dash caused widespread damage in the coastal area of India. The tsunami of 2004. ओके, सो हमारा ये गलत है. जल्दी से उससे देख लेते हैं कौन सा गलत है. आई थिंक हो सकता है वही बाल. ओके यार सही है ये कि इसमें वाटर स्टोरेज. ओके, नीप टाइड्स हैं यार, सब उसको ध्यान रखिएगा. जब ऐसा होता है तो नीप टाइड्स होती हैं. एंड हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.